Hello children, my name is Rashi and in this video we will be starting with the new exercise 2.2. So we were on chapter number 2. The name of the chapter is Polynomials of class 10th. So we have done example from 1 to 5 already. So now we will be starting with exercise 2.2. Exercise 2.2 is on page number 33 of our NCERT book. Page number 33 of our NCERT book. So question number 1 of exercise 2.2 says, find the zeros of the following quadratic polynomials. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between. So we have already done this type of question in our example also. And verify the relationship between the zeros and the coefficients. So this is the question number 1, and we have 6 parts in this question. So let's start discussing them. The first part is x square minus 2x minus 8. X square minus 2x minus 8. Yes. Okay. So this is the first part, x square minus 2x minus 8, and the first thing that we have to do is find the zeros of this polynomial. And how can we find zeros of a polynomial? By middle term splitting, right? So अब हमें middle term split करना है 2x को, ठीक है? So 2x को हम कैसे 2 parts में split करें कि देखो यहाँ पे x square का coefficient है 1, right? So it means 1 into 8 होगा. So कैसे हम 2x को split करें कि माइनस करके तो आए -2 and multiply करके आए 8. 8 into 1 is 8, right? So पहले हम 8 के factors लिख लेते हैं. That would be 4 into 2, 8 into 1 and 2 into 4, 8 into 1, 3, 4, 4 into 2, right? 5, 6, 7, 8. That's it. यही दोनों हैं. तो अब माइनस करके 2 किस में आ सकता है? 8 minus 1 is 7. तो ये तो नहीं हो सकता, बट 4 minus 2 2 हो सकता है, right? 4 minus 2 is 2. It means numbers तो हमें मिल गए 4 and 2. Okay? 4x minus 2x करेंगे तो आ जाएगा 2x, बट वी वॉन्ट माइनस 2x. हम ये माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लीव कर सकते, ये भी साथ में लेके चलना है. इट मीन्स अब हमें ऐसा नंबर चाहिए, मतलब अब हमें इन दोनों को माइनस करके -2 चाहिए, नॉट 2, राइट? अभी तो 2 आ रहा है. 4x minus 2x is 2x, बट वी वॉन्ट -2x. सो फॉर दैट हमें बिगर नंबर के साथ माइनस रखना पड़ेगा एंड स्मॉलर नंबर के साथ प्लस. Now let's calculate this. So plus minus minus 2x and sign negative, bigger number का sign, right? So it means अब हमें इसको ऐसे split करना है, bifurcate ऐसे करना है. So now this would be x square as it is minus 4x plus 2x minus 8. So minus 2x को हमने split कर दिया minus 4x plus 2x में. Right? So this is middle term splitting. This we are doing this, we are practicing this from class 8, right? तो
तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस 8 एज इट इज आएगा. जस्ट माइनस 2x को हमने स्प्लिट करा है माइनस 4x प्लस 2x में. ओके, नाउ लेट्स टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स एंड देन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन है, तो क्या बचा, x यहाँ से और यहाँ से माइनस 4. सिमिलरली फ्रॉम दिस विल टेक 2 कॉमन, तो यहाँ से x बचा माइनस एज इट इज यहाँ से 4. सो x माइनस 4 x माइनस 4 सेम ब्रैकेट हो गया. सो दिस कैन बी टेकन एज कॉमन. सो x माइनस 4 कॉमन आ गया. सो अब क्या बचा, x प्लस 2. So now we have two zeros of this quadratic polynomial. X minus 4 equals to 0 put करेंगे and x plus 2 equals to 0. So this will be x equals to 4 and from here x will be equal to minus 2. Why? Because यहाँ पे positive 2 है. When we will transpose it to the right hand side it will become negative. Similarly ये already negative था तो ये positive बन गया. Right? So x equals to 4, x equals to minus 2. These are the zeros of this polynomial. अब now let's see कि हमारा next question क्या है. I hope this bifurcation is clear. See, हमें ऐसे bifurcate करना होता है इस वाली टर्म को कि यहाँ जो साइन है वो करके, मतलब जैसे माइनस है तो माइनस करके आए माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आए 8 इंटू 1 8. ठीक है, तो वही हमने किया. राइट, 4 2 8 भी होता है एंड माइनस 4 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 2 भी आएगा. राइट, तो बेसिकली ये साइन इम्पॉर्टेंट है एंड दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इम्पॉर्टेंट हियर. Okay, so this was the first question that find the zeros of the following quadratic polynomials. And now let's verify the relation between the zeros and coefficients. So we have already done this type of question in our exercise also. So verifying the relationship between zeros and coefficient, we already know that in a quadratic polynomial we have sum of zeros equals to minus b upon a. And वैसे sum of zeros करेंगे so this would be 4 plus minus 2. right, एक 0 4 है, एक 0 minus 2 है. so 4 plus minus 2 equals to minus b upon a. अब minus b क्या होगा यहाँ से, b is minus 2. right, so minus of minus 2 upon a is 1. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 4 minus 2 is 2 equals to c, माइनस से माइनस कट 2, hence verified. right, and what we can say, hence verified, and we can say that sum of zeros equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square. right, because see minus b is coefficient of x and a is coefficient of x square. right, because इसको हम कैसे लिखते हैं, ax square plus bx plus c. right, तो मतलब 8 जो है that is c. तो ये तो हमने किया, hence verified this, we verified the sum of zeros. अभी product of zeros और verify करना है. so product of zeros equals to c upon a. right, so product of zeros वैसे करेंगे अगर हम, so 4 into minus 2 equals to, अब c क्या है, c is minus 8 and a is 1. ठीक है, so अब ये 4 into minus 2 is also minus 8. so minus 8 equals to minus 8, hence verified. okay, let me check, is this visible? yes. okay, so this is
वेरीफाइड. अब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर दिया. नाउ वी कैन से दैट product of zeros equals to constant term upon coefficient of x square. C upon A. C is the constant term and A is coefficient of x square. So हमने verify किया, hence we can say this, right? So this was part number 1 of question number 1. I hope this is clear to you. First we find the zeros and then we verify the sum of zeros and product of zeros, the relationship between zeros and coefficients. Please note down this part, then we'll be starting with second part. Okay, so let's start with the second part of question number 1 only. So the second part is 4s square minus 4s plus 1. So 4s square minus 4s plus 1. Again middle term splitting से find करेंगे zeros of this polynomial. So see, middle term 4s है, right? Minus 4s, we cannot forget this minus sign. So minus 4s को split करना है in two parts. और कैसे split करना है कि plus करके तो minus 4 आए and 4 into 1 करके, मतलब प्लस करके तो माइनस 4 आए एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 into 1 4 आए. आई होप आई एम क्लियर. देखो यहाँ पे हमेशा ये वाला साइन इंपॉर्टेंट होता है एंड दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इन दिस केस वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे वी हैव 4 माइनस 4, राइट? माइनस 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करके तो माइनस 4 आए, ठीक है? उन दोनों नंबर्स को प्लस करके तो माइनस 4 आए और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 4 into 1 4 आए. ओके, सो now let's write the factors of 4 first. So 1 into 4, 2 into 2. I hope I am clear. इन दोनों के अलावा और कोई factors 4 के नहीं होंगे. So प्लस करके 4 आना चाहिए. So we know that ये तो 4 plus 1 5 होता है, but yes 2 plus 2 is 4. So 2 और 2 में ये split हो गया 2s 2s प्लस करके. But now we want minus 4 not plus 4, right? और अगर हम इनमें से एक को भी माइनस करेंगे so our answer will be 0 because minus 2s plus 2s 0 हो जाएगा, right? So it means हम इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा. Why? Because see, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस होगा तो प्लस 4s and साइन नेगेटिव. सो वी हैव टू सी कि हमें साइन कैसे पुट अप करना है. यहाँ पे अगर मैं एक को माइनस करती एक को प्लस करती तो 0 आता, बट वी वांट माइनस 4s. सो फॉर दैट हमने इन दोनों को 0 माइनस कर दिया, नेगेटिव कर दिया. सो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है एंड साइन नेगेटिव आता है, वही हमें चाहिए, राइट? सो दिस इज माइनस 4s नाउ. इट मीन्स
minus 4s can be split it into two parts, minus 2s minus 2s, अब plus 1 as it is and 4s square भी as it is. Clear? तो फिर ये हो गया हमारा splitting. अब splitting हो गया तो इसकी नीड नहीं है. Let's rub this and now let's solve this for zeros. अब देखते हैं zeros क्या आते हैं. So for that हम इन दोनों में से कुछ common लेंगे then इन दोनों में से कुछ common लेंगे. So from 4s square and 2s is common. 2s common आ गया तो यहाँ पे बचा 2s, यहाँ पे बचा -1, right? Now see यहाँ पे 2s -1 है, इन दोनों में से कुछ भी common नहीं है तो यहाँ पे भी 2s, पर यहाँ पे हमें अब माइनस चाहिए. इट मीन्स वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन. -1 कॉमन ले लेंगे, वी विल गेट ये -1 कॉमन आएगा तो ये प्लस 2s हो गया और ये -1 हो गया तो ये सेम हो गए दोनों ब्रैकेट. सी व्हाट वी एक्चुअली डिड इन दिस वाज, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन, ठीक है, और हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था सो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, राइट? उससे क्या हुआ, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया एंड दीज बोथ द ब्रैकेट्स आर नाउ सेम. नाउ वी कैन टेक दिस ब्रैकेट कॉमन, 2s -1, so we are left with 2s -1. So now the zeros are 2s -1 equals to 0 and 2s -1 equals to 0. सेम zeros आएंगे. So see अभी यहाँ पे 1 को ट्रांसपोज करेंगे पहले एंड देन 2 को, राइट? सो 2s इक्वल्स टू 0 प्लस 1, -1 था इधर जाके +1, सो 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, इक्वल्स टू 1, सो s इक्वल्स टू 1/2. So 1/2 and 1/2 are the zeros of this polynomial. But यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता. Now we have to verify the relationship between zeros and coefficients. So इतना समझ में आया how we found out the zeros by middle term splitting. First part में भी वही था, second part में वही था. And also in examples also we did this same method. ठीक है, या तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी और we can middle term split the polynomial. Okay, the middle term. ठीक है. So now verifying the relationship. So sum of zeros equals to -b/a. ठीक है, -b/a. So sum of zeros वैसे क्या होगा, 1/2 plus 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू -b. b क्या है, b इज -4. माइनस ऑफ -4/a इज 4, राइट? सो माइनस से माइनस कट और 4 से 4 भी कट, तो यहाँ पे तो 1 आ गया. अब यहाँ पे 2 and 2 का एलसीएम क्या होता है, 2. सो दिस इज 1 + 1. सो दिस इज 2/2 equals to 1. So 2/2 is 1. 1 equals to 1. So hence verified. And what we can say now? Sum of zeros equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square. -b/a था ना, -b is coefficient of, in this case we can say s, coefficient of s upon coefficient of s square, right? So this was sum of zeros. अब product of zeros की बात करते हैं. So product of zeros equals to product of zeros equals to c/a, right? So वैसे अगर हम product of zeros करें that would be 1/2 into 1/2 and c is 1 and a is
4. So 1/2 into 1/2 भी होता है 1/4. 1/4 equals to 1/4. Hence verified. So now what we can say is that product of zeros equals to constant term upon coefficient of s square, right? So constant term is c and coefficient of s square means a. Now in this case this is as square plus bs plus c. Okay, so this was our second part. We did the same thing जो हमने first में करी थी, right? So this was our second part. Please note down this. Then we'll be starting with our third part. Let's start with the third part now. I hope you have written this. So the third part is 6x square minus 3 minus 7x. See, now we have 6x square minus 3 minus 7x. But this is not in the standard form. Standard form means from highest to lowest. पहले x square है, then 7x होना चाहिए, then minus 3. So इसको हम लिख सकते हैं in the standard form first, because इसमें तो middle term splitting हम minus 3 की नहीं कर सकते, right? So this is 6x square minus 7x minus 3. ये है हमारी standard form from highest to lowest, right? From highest degree to lowest degree. 2, 1, 0. 3 है मतलब x raised to the power 0, right? So 2, 1, 0. Now let's middle term split minus 7x. अब minus 7x को ऐसे split करना है कि minus करके तो minus 7 आए उन दोनों को, and multiply करके 6 into 3 18 आए. So first let's write the factors of 18. That would be 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, बस यही है, right? So now we want इन ऐसे दो नंबर्स जिनको माइनस करके 7 आए, ठीक है? So I think 9 minus 2 7 होता है. 6 minus 3 is 3. 18 minus 1 is 17. So 9 and 2. We got the numbers 9 and 2. 9x and 2x. But we want minus 7. अब minus 7 चाहिए मतलब बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दो. So plus minus minus 7x and sign negative. ठीक है? So this is minus 9x plus 2x. तो 7x कैसे split हो सकता है? Minus 9x plus 2x minus 3 as it is and 6x square as it is. Now we will take common.
Now let's take common from these two terms and then these two terms. So 6x square and 9x. 6 and 9 are in the table of 3. तो 3 कॉमन आ सकता है इन दोनों में से एंड x कॉमन आ सकता है. सो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस यहाँ पे 3, राइट. फ्रॉम 2x माइनस 3 नथिंग इज कॉमन. ठीक है. सो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3 एज इट इज. सो अगेन दोनों ब्रैकेट सेम है. सो 2x माइनस 3 एज इट इज एंड 3x प्लस 1 is another bracket now. So 2x minus 3 equals to 0 and 3x plus 1 equals to 0, right? तो यहाँ पे अब minus 3 इधर जाके plus 3. 2x equals to 3. x equals to 3 upon 2. This is 1 0. Another 0 would be यहाँ पे plus 1 है उधर जाके minus 1. ठीक है. So x is minus 1 upon 3. So x is 3 upon 2 and minus 1 upon 3. I hope the zeros of this polynomial are clear. Now let's verify the relationship. Is this visible? Yes. So now let's verify the relationship between zeros. So sum of 0 minus b upon a. वैसे sum of zeros क्या होगा? 3 upon 2 minus 1 upon 3. We can say plus minus 1 upon 3. So 2 and 3 का LCM would be 6. This would be into 3 because 2 3s are 6, right? So 9 minus 3 2s are 6 into 2 into 2. 9 minus 2. ये तो हो गया 7 upon 6. ठीक है. अब इधर आते हैं minus b. Minus b क्या है? b is minus 7 upon a is 6. So minus से minus cut. This is 7 upon 6. 7 upon 6. Hence verified. Now we can say that sum of zeros equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square, right? Now coming to product of zeros. I need to refill the ink now. So product of zeros equals to c upon a. c upon a मतलब c is minus 3 and a is 6. minus 3 upon 6. वैसे अगर हम प्रोडक्ट करेंगे that would be 3 upon 2 into minus 1 upon 3. तो 3 से 3 कट minus 1 upon 2 equals to 1 2 minus 1 upon 2. Hence verify. This is very easy now. ठीक है. बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है ये. Now we can say that product of zeros equals to constant term upon coefficient of x square. Constant term upon coefficient of x square. So this was our third part. Again we solve this by middle term splitting. But before that हमें ये ध्यान रखना है कि that polynomial should be in standard form. यहाँ पे standard form में नहीं था. confusion हो जाती है. बच्चे -3 को split करने लगते हैं. No. We need to put the polynomial in standard form first. Then हमें middle वाली term को split करना है. So that we did -7x को split किया in 2 parts. -9x plus 2x. So please note down this part. And now next 3 parts we'll be discussing in our next video. Okay, so stay tuned for my next video. Till then practice each and every question again, make proper notes. Thank you.